ले बाहर का नाम चला। ठीक है ठीक है। Oh my god, I'm fast. For the soul Don't fear the protection. Thank you so much for that $7 मेरे भाई। Thank you so much। Beat on stream भाई। Thank you so much। Beat on stream ओपी कर दो भाई। लॉक कर उसका इस तरफ। ऐसे चल भाई। इसका चाबी नहीं है। Oh. ये जो व्हील चेयर बिठा जाओ। इसको तो कॉफ करके लेके आए। Officers, please handcuff him. अबे तो Yes, इधर yes. कर दो उनको। Get started when you're ready. Where is Kenzie? Yeah, stay there. क्या हुआ? I'm here. I was just waiting for you guys outside, that's all. व्हील चेयर से जो सर Better. Have a seat on this one. इस पे बैठ जाओ। Heart. One instruction, you guys need to come in the mic range and then speak, okay? Anybody who's standing in the mic range would not speak without permission. Am I clear? Yes, my lord. Yes, Your Honor. Prosecution's opening statement then? Absolutely. Go for it. लेट्स गो भाइयों। Today, you will hear the story of Dexter Morgan, an innocent man who has suffered humiliation, violence, and near fatal attack at the hands of the defendants Khilji Singh and Boddy Chadda. The evidence will show beyond a reasonable doubt that these defendants orchestrated a sequence of deliberate and heinous acts that culminated in Dexter's abduction, public degradation, and brutal stabbing. The defense will attempt to distract the court with smokes and mirrors, alibis riddled with inconsistencies, dubious photographs of lookalikes, and even allegations of mistreatment after arrest, such as custodial violence. Check. But let me be very clear, these are destined to shift attention away from the overwhelming evidence of their guilt. On November 9th, 2024, Dexter Morgan was lured into a conversation with Khilji Singh under the guise of settling an old dispute. Moments later, Boddy Chadda appeared, armed with a weapon, and forced Dexter into a vehicle. There was no spur of the moment action. This was premeditated. Dexter was taken against his will, taunted, humiliated, and subjected to mental and physical abuse, including being stripped and forced to dance in front of his captors. This was not the behavior of men resolving a conflict, it was cruelty with intent. And just when you think about it, that it couldn't get worse, the following day in broad daylight at Legion Square, the culprit, Boddy Chadda, again escalated violence, armed with a bone dagger this time. He stabbed my client Dexter Morgan multiple times in a vicious targeted attack. Dexter, bleeding with pain, was rushed to the hospital. The medical report will show you that these were not superficial wounds but life-threatening injuries inflicted with malice and clear intent to kill. Today, I would like you to hear the testimony from multiple witnesses, Tony Cartel, Simba Singhania, and Nikita Roy, all of whom were present at key moments, and it's exactly where Dexter and his witnesses say they were. These records cannot lie. They will contradict defense alibi and dismantle their narrative. Today, the defense will present a range of excuses. They will point to an unused boarding pass and claim it was the defendant's, and it wasn't, and that he was not present in state. But this pass, unused and irrelevant, not stamped by any security agencies, doesn't place the defendant anywhere except exactly where our evidence shows, at the scene of the crime. They will show you a photograph of a lookalike, a grainy image designed to plant the seed of doubt. But our evidence, witness identifications, phone records, and physical injuries leaves no room for mistaken identity. Chadda are guilty of kidnapping, assault with deadly weapons, and attempted murder. You will see that the defense's narrative is not just weak, but a desperate attempt to obscure the truth. Your decision in this case is not just about holding these defendants accountable to their action. It's about reaffirming the principle that no one, no matter how careful they try to cover their tracks, is above the law. Yes, We ask that you listen carefully to the evidence, weigh it with clarity it deserves, and deliver a verdict that speaks the truth. May the defense proceed, my lord?
In English बोलिए. प्रोसेस हो रहा हूँ. Hi. Hi, hello के love. Justice, ladies and gentlemen sitting in the court. Today I stand before you not just as Kenji Sakai, the advocate for Mr. Boddy Chadda, but as a voice of reason and justice. In the face of a pivotal question, can a man be condemned under the shadow of an offense that the law itself does not acknowledge? In a society governed by principles, fairness, and the written law, we must hold fast one unyielding truth. Motivational speech. Whether there is no law, there can be no crime. Defense before punishment and clarity before judgment. Mr. Chadda is not on trial for what is written. He stands accused for what is imagined. A charge that floats in the void of legislative silence. That is not just his trial, but a trial of how deeply we honor the words nullum crimen, nulla poena sine lege, which is a legal maxim, which means no crime, no punishment without the law. केंजी जी चड्डा सेफ रहना तू चड्डा. कोर्ट चुप ये रहे, सबको चुप रहे. बताना चाहेगी कि अगर लेजिस्लेशन में कोई लॉ अवेलेबल नहीं है, that doesn't mean there is no law and order. समझ में ना आ रहा है तो चुप हो And that is why, you know, sometimes we as human beings, as a society, we do set precedents from the cases like these. However, the court is also not so blind that it shall give its judgment or pass on the verdict without any solid evidences. Now, I shall request both of you that we must proceed now and see towards the evidences. Prosecution would like you to draw attention to our set of exhibit. Could you point me to them? राइट में जाओ. Of course, Your Honor. Just give me a second to pull my file right up. The reports that are available, co-signed by Dr. Tango Charlie, who's the medical expert at Pillbox General, which show that Dexter Morgan has suffered severe wounds. Sorry. Medical reports show that Dexter Morgan has suffered grave injuries from a blunt force trauma, something that is possible only with a sharp object like a bone dagger, as defined in our initial report to the police. These injuries were life-threatening, and when you look at the texts that we found in Mr. Boddy Chadda's phone upon arrest, these also point that Mr. Boddy Chadda knew a place where he could buy such an item. See the document now. And All right. Are you referring to the screenshot from a cell phone? Yes, yes. This is. You can also see that there are pinpoint markers to a certain location. Object to this actually. Can we have the person that the prosecution is actually referring to as a witness to confirm whether the statement is actually a truth or a hoax? Of police here is. Did you guys go and check this location? Ready to talk now? भाइयों लगे. पीछे सबटाइटल कौन Sure. दे रहा है? Congratulations. So, sir, these evidences that came from Boddy Chadda's phone, and in this location there was nothing in it. We'll search the location, but the text was there. That's why I sent it भाइयों जिलन को भी English from the phone. Okay, and why this information is missing from your report? I gave it to the DA Guys, today. please be silent, please. It's a request. Did you specifically mention that this location holds no value? Sir, it is definitely possible that this location was a point where the defendant met with the person he was texting with, and then they proceeded onwards to the location where the knife was being sold. क्या बना रहा है? See, Bennett, you know very well this could all be, you know, hearsays, because do you have this? सही बात है यार, चड्डा ने Check, सही नहीं watch किया. My lord, objection. The whole statement he gave is speculative. Sustain, I cannot take this as evidence. All right, moving on. Yes, पहला इनका एविडेंस फेल हो गया है भाइयों. We Let's also go. have a phone chat from Mr. Boddy Chadda's phone, which has a title kidnapping. Objection, chats my were lord. deleted. My client did not give any consent to go ahead and give any information from his phone. And as long as the law prevails, the opposing counsel, whether as even the police department, does not have any right to go through and invade someone's privacy without Your Honor, there having was an permission arrest from warrant yourself, my lord. against the person, and the person consented to this search. Lord, an arrest warrant does not warrant invading privacy after the person is wrongfully arrested.
strong emphasis on that wrongfully arrested part. उन्होंने कंसेंट भी नहीं दिया. ठीक है. Before we proceed, guys, for the sake of the citizens of Los Santos, क्या आप दोनों को हिंदी में वार्तालाप करने में कोई समस्या है? भाई दोनों की लगी. नहीं sir. The defense can try a lot, but it will be difficult. We are fine with it. कोशिश करते हैं इसको हिंदी में रखते हैं. एग्री करते हैं हम. डब्लू भाइयों ये. Apparently, Austin, हाँ. हमारे लॉस सेंटोस का जो पढ़ने लिखने की क्षमता है वो बहुत कम है. I can understand your honor. Hindi is Defense can agree to that. my lord. So where were we? Yeah. So लुल भाई. unlawful seizure of his cell phone device. Is that? मैंने डीएम किया था खिलजी भाई को कि आप ही कर सकते हो ये चीज. Exactly, sir. Your Honor, the cell phone search was necessary to find out the location of Mr. Boddy Chadda. Mr. Boddy Chadda was asked to present in front of the police department, but he failed to comply with this process. Instead, he told us that he was not present in the village, to which the defense submitted a set of boarding passes which were unused, not stamped at all, and we can very well place the suspect within the location through multiple means of evidence, such as tickets to a concert that was being conducted in the state. हिंदी कहाँ है? My lord, I would really like to actually go ahead and object to that. Because the thing is, it's very clear that yes, it might be necessary to go ahead and get the evidences, but there is a procedure to be followed to go ahead and make sure that the right to privacy is not invaded, which is one of the fundamental rights of a human being. Hindi. आवाज आ रही है. ब्लैक. Sure, sir. सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, स्पेशली एक डेमोक्रेसी में, एंड यूनाइटेड स्टेट्स एक एपिटमी है उस चीज का. एंड अब अगर ठीक है, द अपोजिंग काउंसिल थिंक्स कि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी था टू गो अहेड एंड गेट इट, लेकिन सर उसके लिए एक प्रोसीजर है. द राइट टू प्राइवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा किंजी. ये जो सेलफोन वाला मैटर है वो क्रॉस हो चुका है. एग्जैक्टली. एविडेंस एग्जिबिट वेलन भाई बस सब सही है. यहाँ बात हो रही है आपके जो टिकट्स हैं लॉस सेंटोस टू न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली टू लॉस सेंटोस. देख लो यार. उसकी बैठा रही है. उसके ऊपर बात की जा रही है फिलहाल. बात नहीं हो रही है यहाँ पर. Alright, I would like to go ahead and point out the boarding pass, which is from New Delhi to Los Santos. The arrival was at 4 a.m., my lord. Sir, 0400 से मेरा तो मतलब बस एक ही निकलता है. It's 4 in the morning. सुबह के 4 बजे. Exactly, 4 in the morning. That is what you're saying. जी सर, जो The event कॉन्सर्ट was था on वो 8th शाम. evening. जी सर, शाम के 4 बजे और आपके क्लाइंट आए थे लॉस सेंटोस में सुबह के 4 बजे. Is it not possible for your client to attend the concert that was there 8 की शाम को? Absolutely, it is. What are you Exactly. trying to point at? Your client just told If the you're police. going ahead, going to the legitimacy of the boarding pass as well, they are legit. But Of course. The only thing is, the pictures are taken before submitting and actually going through the whole thing. Sorry, No, Kinsey, wait. Yeah. You tell me one thing. I see this evidence of these two tickets. Absolutely, Which is sir. one from Los Santos to Delhi. Los Santos से Correct. दिल्ली की है, दूसरी दिल्ली से Los Santos है. Correct, sir. Why the second half of the ticket जो usually airline द्वारा रोक लिया जाता है, Correct, वो sir. इसमें क्यों है? क्या ये फोटो पहले की है, sir. पहले Exactly. When the tickets were booked. when the tickets were booked? Exactly, sir. प्रूफ नहीं है कि इनके क्लाइंट ने वो फ्लाइट बोर्ड करी थी. इसका बस ये मतलब है कि इनके क्लाइंट्स ने टिकट्स परचेज करी थी. गुड्डी छोड़ने गई थी मुझको. Objection, my lord. Number one, I have 2 witnesses who can go ahead and state this, that they did leave Mr. Chadda at the airport. Number 2, my opposing counsel is from the state. They can go through the records and check whether the person boarded the flight or not. I will get to that. Did you list your witnesses in the? डिक्शनरी ले आ. Yes, I did, my lord. Actually, my primary witness, Ms. Goody Kumari, is actually running late due to some traffic issues. Mr. Bennett, anything else you would like to talk about the event, the tickets, anything else?
was pointing to. These are logs from the event, from that we secured from the event organizers. These show that Mr. Boddy Chadda was present with him and his friends that we have mentioned in our report, who had assisted him in allegedly attempting to murder my client, Mr. Dexter. Let's just see this, my lord. My father met Saddam Hussein back when he was a youngster. Does that make him an accomplice to the crime that Mr. Hussein committed? क्या बात है? What is this, my lord? मुझे नहीं समझ में आप क्या बोलना चाह रहे हैं. Sir, I am just saying is my client went in the evening to the concert to enjoy the concert. Happens to meet some people, get some pictures clicked. How is that an evidence? Because we have already stated that yes, my client did go to the concert and it was very humanly possible to do so. Exactly, sir. He was then called on 9th morning, Wrong, which sir. he responded and he went to the MRPD. Am I correct? Yes, exactly. Yes, correct. He was called on the 9th, then he went to the PD and gave his statement. But, so can I say something? No, not yet. So far, Bennett, you have any issues with this timeline? No, sir. Okay. See, I'm just trying to take everything, one by one, because it's creating a little confusion around the case now. So I called Boddy Chadda at 6 November. Then he didn't appear and he appeared at 9 November. क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कॉल कर रहा था ना उसको 6, 7, 8, 9 ढूंढ रहा था मैं सिटी हर जगह पर. मैं 6 को. Give me a second. दद्दू शांत रहो. Why don't I see that log? Bennett. अभी तक तो भाई हम जीत रहे हैं. अभी तक तो हम जीत रहे हैं. अभी तक तो हमारी बाजी I think so, हमारे but, हाथ में है. you can also find in the discoveries that there is a bank record where a local transaction has been made, again, from the bank account of Mr. Boddy Chadda to Mr. नेट बैंकिंग होती है ब्रो. On The transaction could be done by checks, and I'm still pointing at the papers. Sir, check पहले sign करके दे दीजिए, and I will go ahead and withdraw the check after a few days. Sir, their bank records clearly show that the location of the transaction, that it was a local transaction. And as to the Exactly what I'm subpoena, stating. we have a written document showing that the DA's office has approved this search into Mr. Boddy Chadda's phone for charges under the HUT. Objection, my lord. DA's office approved. लाइक करो भाइयों. My lord, I don't think so. I have to say anything to that. भाई कुलचा भाई. ये बड़ा भाई इसकी चड्डा भाई. कैंडी. भाई मेरे को बहुत मारा कुलचा. लेने गया भाई क्या तू कुंडी को कोई? टेंशन मत ले भाई, टेंशन हाँ, मत हाँ, ले. गला कम कर, गला कम रोया. कर. सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. You may now proceed, Bennett. Alright, Your Honor. तो डेक्स्टर जी, आप अपना बॉडी चड्ढा और कुलचा सिंह के साथ क्या नाता है वो बता सकते हैं इस कोर्ट को? हाँ जी सर, पहले तो फ्रेंड्स थे, बट आई थिंक वो बॉक्सिंग मैच के बाद उन्होंने राइवल बना दिया होगा शायद मुझे. Objection speculative. The statement given is speculative, my lord. Sir, the statement is a personal opinion and does not fall under the category of anything that is being speculative. It is a simple personal opinion. Go ahead, Bennett. Sir, आपका इस इवेंट के पहले कोई नोकझोंक हुई थी? कभी नहीं. कभी नहीं. तो ये दोस्त थे आपके सारे, और फिर ये बॉक्सिंग मैच के बाद जो राइवलरी थी वो शुरू हुई. तो हाँ जी. कैसे शुरू हुआ ये बॉक्सिंग मैच का इवेंट? तो मुझे कुलचा सिंह का फोन आता है एंड वो मुझे बुलाते हैं डेल पेरो पियर पे. देयर वाज अ बॉक्सिंग रिंग कि यहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह हम कर रहे हैं, आप आ जाओ. एंड आई वाज लाइक रोमिंग अराउंड विद माय फ्रेंड्स. तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है चलते हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है. एज सून एज आई रीच देयर, वहाँ पे रिंग में कुलचा सिंह होते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं, एंड वो मुझे कॉल करते हैं फाइट के लिए. मेरा पहला स्टेटमेंट ये रहता है कि यार आप, मैं उनको ऐसे भी कुलचा भाई कहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़े हैं. तो मेरा पहला स्टेटमेंट ये रहता है कि मैं आपसे नहीं फाइट करना चाहता बिकॉज आपकी एज बहुत ज़्यादा है और वो अच्छा नहीं लगेगा कि हम दोनों फाइट कर रहे हैं. तो वो कहते नहीं आ जाओ, इट्स अ फ्रेंडली एंड ऑल. तो ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, बट मैं फाइट वाइट नहीं करना चाहता. मैं 2 बार उनको डिनाई करता हूँ और फिर वो कहते नहीं कोई बात नहीं, आ ही जाओ. तो अब उतने में क्या होता है कि वो मुझ पर पंच थ्रो करना स्टार्ट करते हैं. फाइट वाइट स्टार्ट हो जाती है. वो बेल जैसे मजाक में जब बना देते हैं वैसा.
तो अब वो मुझे इतने ज़्यादा पंच मारने लग जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा तो आई माइट गेट अनकॉन्शियस। तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ डिफेंड करने का, एंड देन एक दो पंच मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि अब वो फाइट स्टार्ट ही हो गई है तो मैं डिफेंड तो करूंगा अपने आप को। मीनवाइल क्या होता है कि मेरे एक पंच से वो रिंग के बाहर चले जाते हैं। तो अब लॉ बेसिकली रूल ऐसा होता है कि अगर आप रिंग से बाहर हो तो आप आउट हो। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है ये तो खत्म हो गया मैच, तो मैं वापस पीछे आ जाता हूँ रिंग में और अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो नीचे खड़े होते हैं। मीनवाइल वो पीछे जम करके वापस आता है और पीछे से मुझे ट्राई करते मारने का, जिसमें मुझे नेक पे लगती है पीछे और बैक हेड पे और शोल्डर पे मार लग जाती है और वो लात वात भी मारते हैं। तो मैं घूम के दोबारा से एक पंच मारता हूँ एंड 2-3 पंच एक्सचेंज करने पे वो डाउन हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। भाई तो झूठा यहाँ से भाई। हमारी बॉक्सिंग फाइट खत्म हो जाती है, तो फिर मैं बाहर आ जाता हूँ रिंग के। ये इंसिडेंट जो आप बता रहे हैं ये किस दिन का था? ये किस दिन का था? क्या आप डेट अ, बता सकते हैं इस कोर्ट को जब बॉक्सिंग हाँ इवेंट जी, हुआ? हाँ जी, ये 5th ऑफ नवंबर या 6th ऑफ नवंबर, दोनों में से कोई एक डेट हो सकती है। 5th नवंबर आई वुड से। ओके। एंड उस टाइम पे क्या आप जानते हैं कि बॉडी चड्डा कहाँ थे? वो वहीं पे पड़ा हुआ था जमीन पे, मरा हुआ था, मतलब थोड़ा अनकॉन्शियस था। और तो वो बेसिकली कुलचा सिंह के साथ थे बॉडी चड्डा? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जब वो कुलचा हारा तो ये चिल्ला भी रहा था थोड़ा कि अरे हार गया ये वो चीज़ है। तो ही वॉज अनकॉन्शियस बट नॉट फुली अनकॉन्शियस, बट थोड़ा सा वो देख रहा था आई गेस फाइट। ओके, तो ये बॉक्सिंग मैच के बाद क्या हुआ? 4 को था आई थिंक सो, बॉक्सिंग मैच के बाद है ना? पिल बॉक्स पे 4 लेके को गए था। दोनों को। मैं भी उनसे उनकी हालचाल पूछने गया कि कैसे हैं आप, ठीक है। तो ही वॉज लाइक कि यार आपने मेरे को लात मार दी है ऐसा वैसा। तो मैंने उनको बोला कि यार मैंने आपको पहले ही मना किया था कि मेरे को फाइट नहीं करनी है, बट इन केस अगर वो वीडियो कॉल उठा ले तो पोजीशन पता चल जाए हमारी कि हम कहाँ पर है। तो वो वीडियो कॉल उठा लेता है कुलचा सिंह और उसको मालूम पड़ जाता है कि हम लोग इतने इतने एरिया में कहीं तभी हैं। और तब तक ये लोग मुझे डांस करवाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि तूने हमें पैरों के बीच में लात मार दिया, लड़कियां हमें ऐसा बोल रही है वैसा बोल रही है और बॉक्सिंग फाइट नहीं करनी चाहिए थी ये वो। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये एक ग्रज है जो कि मैं इतने टाइम से एक फ्रेंडली समझ के चल रहा था, बिकॉज मैं हॉस्पिटल भी गया था उससे बात करने। अरे तो मैं समझ यार जाता हूँ ऐसा कि ये कुछ नहीं इन्होंने होगा। एक ग्रज होल्ड किया मेरे अगेंस्ट में, इसलिए मुझे उठा लिया। मैं यही मेन रीजन है उठाने का, मुझे किडनैप करने का। तो ये सब चीज़ें होती हैं उतने में वो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं, मुझे कहते हैं कि चलो ठीक है गाना वाना गाओ। मैं गाना वाना गा देता हूँ, डांस वांस कर देता हूँ। फिर वो मुझे मेरा फ़ोन वगैरह वापस करते हैं और अपनी कारा में बैठते हैं रेंटल, एंड वो वहाँ से निकलते हैं। और थोड़ी देर में मेरे दोस्त लोग मुझे पिक करने आते हैं फिर। ओके, तो डेक्स्टर जी आपको ये सारे जो इवेंट्स थे ये क्या लगते हैं कि ये इन्होंने प्रॉपरली प्लान करके प्री मेडिटेटेड तरीके से किया था, ये ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट काइंड ऑफ एक्शन था कि बस चीज़ें अनफोल्ड होती गई एक के बाद एक? सो इट वॉज प्री प्लान्ड जैसा मुझे लगता है, बिकॉज अगर ये स्पर ऑफ द मोमेंट होता तो हम लोग शायद चिल कर रहे होते, बातचीत कर रहे होते हैं, या फिर सडनली वो मेरे पे आते या कुछ बोलते हैं हाँ चलो चलो तो मैं जाता है ऐसा कुछ। बट इट वॉज लाइक प्री प्लान बिकॉज हम लोग अलग जगह पे थे, वो लोग अलग जगह। एंड देन कुलचा कोई मेरे प्रूफ पास ही नहीं आता है, है। मुझे एक साइड में लेके जाता है। मैं देखता हूँ वैसे वहाँ पे कारा खड़ी है, बट आई वॉज लाइक कि ठीक है किसी और की होगी। देन वो घूम के मेरे पास आते, एकदम से वो सब 4 लोग निकलते हैं, 3 लोग निकलते हैं उसमें से, एंड देन चाकू वाकू निकाल के मेरे पास आ जाते हैं। तो इट वॉज लाइक कि मे बी ऐसा था कि शायद कुलचा को वो बेचे कि भाई ठीक है, बिकॉज मैं कुलचा से ही बात करने गया था, बिकॉज मेरी और उसकी बॉक्सिंग फाइट थी। तो मैं उनसे ही बात करने गया था, उनका हालचाल पूछने गया था हॉस्पिटल में, तो वो उसी को भेजते शायद, एंड देन मैं उनके साथ ही सिग्नल तक जाता हूँ और फिर मुझे वो किडनैप कर लेते हैं। आई डोंट थिंक ऑलराइट सो इट सर। वाज फॉर ऑफ अ मोमेंट, इट वाज प्री प्लान। एंड क्या आपको अब सेफ लगता है इस सिटी में घूमते हुए, ये जानते हुए कि ये लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट Objection अब तो calls for नहीं, बिकॉज speculation. उसके जस्ट नेक्स्ट डे मुझे स्टैप भी कर दिए थे। मैं 2 बार जख्मी हो चुका हूँ काइंड ऑफ, कह सके ऐसे। तो अब जब भी कोई आपको किस टाइप की चोटें ऐसे लगी थी इसमें जो इन्होंने स्टैब किया था? या तो डे 2 को इन्होंने मुझे स्टैप किया था लीजन गराज के पास, ओके। जिसमें इन्होंने इनके हाथ में जो बोन डैगर थी जिससे इसने मुझे किडनैप भी किया था डे 1 को, वही चीज़ उनके हाथ में थी। तो पहले तो इन्होंने घुमाया, मैंने डिफेंड करने की कोशिश करी तो हाथ वाथ बीच में डाल दिया मैंने, तो तब मैं अनकॉन्शियस नहीं हुआ था। बट सेकेंड बार जब इन्होंने किया तब वो डायरेक्टली मुझे टच कर गया था मेरे बॉडी पे, एंड आई गॉट डाउन अनकॉन्शियस। ऑलराइट, एंड देन यू वेंट पिल बॉक्स एंड डॉक्टर टैंगो ने आपको ट्रीट किया जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मुझे मेरे दोस्त जो जितने भी वहाँ पे खड़े थे उन्होंने मुझे पिल बॉक्स लेके गए और वहाँ पे भी मेरे को ट्रीटमेंट दी गई। मैं थोड़ी देर वहाँ रेस्ट किया और फिर मैं सो गया था वहीं पे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डेक्स्टर जी। The Thank you. defense can proceed with the cross examination, Yana. You.
Go ahead. My lord, may I begin with the pros? Yep. Go ahead. Right, Mr. Dexter, my first question to you is, how well do you know Mr. Boddy Chadda? How well do I know him? Yeah. I met him, I guess, कुछ दिन पहले ही. He was pretty Exactly, good कितने to दिन me पहले, if you can. before the boxing Mhm. match. Let's say maybe 10, 12 days पहले. 12 days before you met him. Yep. Right. What all things do you know about Mr. Chadda? Nothing as much. Nothing as much. उनके एक डैड है जो शायद पुलिस ऑफिसर में है जिनका नाम रतन लाल चड्डा है. That's a fact. Do we have the defendants to put up a charge against Boddy Chadda of kidnapping, or it is just attempt to murder? So we have placed charges of kidnapping, attempted murder, and also premeditated plan to murder. Kidnapping. Okay. And what are the evidences for kidnapping? I mean, I know Sir, you guys are cross-questioning, there are witness accounts of government employees as well as friends of Dexter Morgan and other people who were talking to him while the kidnapping occurred. So, friends of Dexter Morgan, they can't be the witnesses for this. All right, Your Honor, but we still have reputed government employees as well as third-party witnesses who have no relation whatsoever and their biases are not represented in their statements. We'll go there, but Kenzie, any next arguments you have? So my main argument is that, like I just made it actually. There are people who could look similar. Was being chubby and being I that, do not and buy मैंने एक that. picture भी Let submit me करी है tell sir. you, I see that picture and I do not buy it because sir. to what Mr. Morgan is referring here is personality traits and not physical appearances. He has not once mentioned his physical appearances except for the way he dresses, right? And even in the picture that you have sent, should you talk about the dressing sense, these are two complete different attires that I see in the picture, right? Absolutely, sir. And right. And we'll not go into the appearances part because clothing is freely available across Los Santos. Yes, sir. Okay. Any other argument apart from I have a being rebuttal lookalike? witness to confirm that Mr. Chadda was not even present in the street. But do you have any more questions for Mr. Morgan? For Mr. Dexter Morgan, no. Please be mindful because you won't be able to call him back again today. Oh, all right. Then to just confirm a few more statements from Mr. Morgan. Mr. Morgan, do you mind running us through the whole situation again? After you were stripped down, that is. So basically you're asking for day second, right? Yeah.